because you missed watching Sanam Teri Kasam in theater. Part 2 never got made. Ehan, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के? यहाँ Please, somebody. एक ही है, हर्षवर्धन राणे. All the waste of that camper man was just being littered down What is this there. way of getting people closer together through things? Thank you for bringing it. मैं आपके साथ अगर तभी होती हॉस्टल में, मैंने आपको बेल्ट दिया होता, ठीक है, अपने हाथों से कि प्लीज बाहुबली गो फाइट. 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है. A very very good day to our star cast of Dange. I wish there was TJ Bhanu as well. I wish बाकी सारे भी होते, but यहाँ पे हमारे पास इतनी chairs हैं. And you guys are the chosen ones. So hi Nikita, Harshvardhan, hi Ehan. My first question is for Nikita. थोड़ा सा ये हो सकता है कि controversial या you don't want to answer whatever for all of you. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आंसर करना है, आप कह सकते हैं shut up प्रेरणा, we'll move on in life. We're adults and that's what we do. Yeah. अगर आपको ऐसा लगता है दंगे में अगर दो मर्दों के जगह पे दो औरतों की rivalry होती, do you think वो फिल्म चलती ही नहीं चलती? What would your what's your take on that? Yeah, I know we talk about not discriminating between men and women. जी. But naturally कुछ behaviorisms हैं हमारे जो अलग है. You will not see two women get into punching each other, riding on bikes. Have you seen Delhi Metro, those reels? I'm talking about a majority. Okay. Hair pulling is fine. Yeah, We're hair talking pulling about is punching. fine. Punching. Proper action. Proper action, yeah. Hitting each other with bats and like beating each other red and blue. Like when will you black and blue? That's very rare to see, to be very honest. Here, two men fighting. I'm not saying this doesn't happen or it may not happen. I'm just saying this is something that happens. अगर आप उसमें जाएंगे, दो औरतें अगर लड़ेंगी ना, बहुत अलग तरीके से लड़ेंगी. ये आपने अभी बोल ही दिया. मतलब I've also been in a cat fight in my life. And वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी. Let's discuss the cat fight that Nikita was in. ये कब, कहाँ, कैसे और किसके साथ हुआ? नाम हमें नहीं चाहिए, आप नाम बना लो. So I just chose not to say this. It They was. kept asking you, did you do the I didn't want to. I really didn't want to because actually I'm a very peaceful person. It was just one of these episodes कि हो गया था between two sets of like groups in the hostel, and it was the reason was literally very silly. We used to get ice creams on Wednesday and Sunday. And उस दिन रात को we used to sneak into the kitchen of the hostel and remove all the ice creams that were left over. And उस बात पे two people have gone inside, the others have found out, they have come. That झगड़ा turned into this. So I just want to take this moment to say I'm very proud of you. आपने सच्चाई के लिए लड़ाई की है. मैं आपके साथ अगर तभी होती हॉस्टल में, मैंने आपको बेल्ट दिया होता, ठीक है, अपने हाथों से कि प्लीज बाहुबली गो फाइट. So my only thing is that girls will not fight this way. We'll fight, of course we'll fight, Sure. but not like this. So yeah. Harshvardhan, there's a lot of love which is anyway there for you. और आपने recently एक sentence भी कहा था जहाँ पे आप मोटिवेट कर रहे हैं व्यूअर्स को जाके फिल्म देखें. क्या आप हमारे मिर्ची के लिसनर्स को भी आपकी जर्नी के बारे में फ्रॉम सनम तेरी कसम टू नाउ एंड हाउ विल यू मोटिवेट देम टू सॉर्ट ऑफ गो एंड वॉच दंगे? I feel मोटिवेशनल स्पीकर्स को ही करना चाहिए. मैं एज एन एक्टर सिर्फ एक इंटरेक्शन के द्वारा मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप जो पार्ट 2 मांगते हो वो आप ही के हाथ में है. कैसे? अगर आपने पार्ट 1 का टिकट खरीदा होगा तो पार्ट 2 ऑटोमेटिकली बन जाए. जैसे कि रेडियो टीवी में टीआरपी होता है, रेडियो में आपने बताया रैम होता है. तो टीवी एक्टर्स को बोलोगे आपकी ये शो फिर से बनाओ, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स को मालूम चलता है और वो पार्ट 2 उसका बनाते हैं, एक्सटेंड करते रहते हैं. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. तो ये मुझे मेरे जो एक्टिंग के गुरु हैं, मेरे सौरभ सचदेवा सर, उन्होंने इस बात में मुझे काफ़ी बोला है कि इफ़ यू कम्युनिकेट विथ अ ईजी लैंग्वेज many other things get solved. तो मेरा यही कम्युनिकेशन है इन कॉलेजेस में पैम्पलेट बांट रहा हूँ, उसमें यही लिखा है. उसमें 3 लाइनें लिखी. एक ये है कि बिकॉज यू मिस्ड वॉचिंग सनम तेरी कसम इन थिएटर, पार्ट 2 नेवर गॉट मेड. अब मेरी फिल्म आ रही है दंगे ऑन 1 मार्च. इसमें कोई किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्यूजेशन नहीं है. इट इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन. सो आई डेफिनेटली, नो एक्टर ऑन दिस प्लानट कैन कम टू अ रेडियो चैनल और गो टू अ बिग स्टेज एंड प्रमोट देयर फिल्म एंड पीपल विल गेट स्वेड. वो कभी नहीं. दे विल डिसाइड ऑन देयर विल. दैट्स हाउ पीपल function view. That's how powerful they are. So trailer अगर अच्छा लगा है, and if you want to see all 3 of us again, buying a ticket will ensure that. Not buying a ticket,
वी स्टिल कीप वर्किंग, बट हमारा जो वो है रास्ता, वो थोड़ा घाट, जैसे पुणे बॉम्बे का घाट होता है ना, वैसे थोड़ा थोड़ा स्टीप होता चला जाए और कुछ नहीं. बट हम लोग इतने वो हैं, मैं इनको 2-3 दिन से जान रहा हूँ. वी हैव नॉट स्पोकन सो मच ऑन द सेट्स. वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड मुझे ऐसा लगा कि ये कॉमन थ्रेड है हम लोगों को, इवन विजॉय सर फॉर दैट मैटर. हम लोग करते रहेंगे. एंड निकिता डजंट लुक लाइक अ पर्सन हु इज गोना गिव अप. एहान बहुत है स्ट्रॉन्ग, वही करता रहेगा. वी ऑल्सो शेयर a little piece of history. I did a film called Sanam Teri Kasam, right? So when I went for the audition, they told me, आप late हो and हो चुकी cast. And then I said, please मेरा audition देखो, please. And I almost begged them. And then they उन्होंने कर चक्कर और audition किया. They said फिर से करो. उनको ठीक लगा, उन्होंने कहा फिर से करो. Then I did it again. And then they again went back for 1.5 hours and came back. तब तक मुझे कास्टिंग वालों ने बताया था कि द बॉय इज सिटिंग इन द नेक्स्ट ऑफिस और वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो. बट मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया. देन दे अलाउड मी एंड देन फाइनली आफ्टर द सेकंड थर्ड ऑडिशन द डायरेक्टर केम टू मी एंड सेड कि वी आर गोइंग अहेड विथ यू एंड आई वांट टू गो टू द वॉशरूम. उन्होंने कहा बगल वाले ऑफिस में चले जाओ. तो हम गए, मैं गया वहाँ पे. द बॉय वॉज सिटिंग एंड रीडिंग द स्क्रिप्ट. दैट वाज एहान एंड he made me feel so comfortable on the sets of Dange, because this story I told Bijoy sir कि सर हमारा थोड़ा बैक स्टोरी है which will work for the film, क्योंकि वो जब मुझे मारेगा तो बहुत फीलिंग से मारेगा. लेकिन this man is so gentle and वाकई में मुझे लगता था कि मेरे को भगवान टेस्ट करता है. he I think मुझसे ज़्यादा पेशेंस वाला मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं. and I look up to him and his level of understanding about the world and how he deals with things. क्योंकि आपके साथ चीज़ें तो बहुत होती है, but how you react to them is what makes you very beautiful, and that's why I always say कि ये इतना खूबसूरत सिर्फ दिखता ही नहीं है, इसका दिमाग भी बहुत खूबसूरत है, दिल और दिमाग. It's very sweet. It's just incredible. तो अभी जो हम एक्शन सीक्वेंसेस देखने वाले हैं दंगे में, वो एक्टिंग आपकी कमाल की लगी, because obviously there's so much love between the two of you. Ehan, we'll move on to you. पंकज त्रिपाठी ने ना एक इंटरव्यू में एहान ये कहा था कि जीवन में वो फिल्मों को इस प्रकार से चूज करते हैं कि एक बिजनेस के लिए घर चले, जिससे एक उनकी मर्जी है क्योंकि उससे उनको एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है, और एक OTT. तो अब मतलब वो ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं. आपका डिसीजन मेकिंग किस हिसाब से होता है? सही बोला जी. त्रिपाठी सर ने. कभी कभी कुछ चीज़ें आपको पैसे के लिए करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप घर लेते हो उसके बाद घर में फर्नीचर चाहिए, टीवी चाहिए, उन चीज़ों के लिए आपको पैसों के लिए कुछ करना पड़ता है. बट देन जब आप एक सर्टेन अमाउंट बनाते हो लाइफ में, उसके बाद यू हैव द चॉइस टू डिक्लाइन. बिकॉज जब हम आते हैं, आई डोंट नो, पीपल कम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड्स, रिच बैकग्राउंड्स, आई डोंट नो, बट हियर टू सर्वाइव इन मुंबई you have to pay so much rent. Every day you have to travel, you have to pay your transport money. So it takes a lot from your pocket. And when you come as an actor, you don't have a second job. Like, मैं कहीं और काम नहीं करता हूँ. This is the only thing I know. Right. So whatever I'm investing, it's from my own pocket. So yeah, in life, like I have taken decisions where I did few things for money. But recently, I actually was surprised. Like I was offered 2 scripts, and I had this in me. I had the power to decline it, because I didn't feel like I could associate myself or I could do the justice to that project. The first time I felt like it's okay, the kind of money which will make me mentally safe in my headspace, I kind of made it, but now I can choose. Does that make you feel now powerful? I have the privilege. Yeah. Does that make you feel powerful? Does it make you feel more confident of your existence? Powerful is such a strong word to use in the industry, but it does make me For yourself, in a personal sort of it does make me feel secure and safe. That I am privileged now to choose what I want to do and where I see myself with this film or with this project. Yeah. My next question is again, during the pandemic, हर्षवर्धन, आपकी एक न्यूज़ आइटम आई थी, एक आर्टिकल आया था जहाँ पे आपने अपनी बाइक बेच दी थी क्योंकि आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे रहे थे लोगों को, है ना? और मैंने आपको मैसेज किया था ये पूछने के लिए कि कैन वी डू एन इंटरव्यू, और आपने कहा था देखो मैं ये सब जो कर रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ, पर मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता. So there is this innate sense of innocence and just charitable existence that you have, and just extremely nice and everything. कोई खराब बात है आपके बारे में? I will ask Nikita this. What is that disgusting, not so cool trait about Harshvardhan that you probably would want to? There's not a trait, but there's something that Harsh has done which has disgusted us. And how? Can I say it Yeah, on camera? Please say.
So we were shooting in Vasai, which is 2.5 hours away, and हम लोग I mean I know Harsh is being modest about his wants and all, but हम लोगों के पास ऐसी fancy कोई कार नहीं है. हम लोग रोज वसई जाते थे 2.5 घंटा, आपको मालूम ही होगा यहाँ से 2.5 घंटा लगता है. Go there, shoot there for some 16-17 hours, come back 2.5 hours. Harsh has a fancy camper van, जो उनका मिनी घर है, देखा होगा वो ट्रैवल करते हैं उसमें. हर्ष वो लेकर गए और उन्होंने उसको वहाँ पार्क कर दिया. आई विल स्टे हियर. तो ऐसे बैरन लैंड के बीच में जहाँ सारी वैनिटीज पार्क थी, हर्ष अपनी कैंपर वैन में वहाँ रह रहे थे. अभी उसका आई थिंक देयर वाज सम वेस्ट डिस्पोजल इशू व्हिच वी डिड नॉट नो अबाउट, ही डिड नॉट नो अबाउट. तो जो उसका जो वेस्ट डिस्पोजल हो रहा था कैंपर वैन का, दैट वाज हैपनिंग राइट देयर. एंड हर्ष डिडंट नो अबाउट इट, वी डिडंट नो अबाउट इट. वी गॉट टू नो अबाउट दिस very recently. Harsh found out when the schedule got over. Oh no! Ki basically all the waste of that camper van was just being littered down What is this there. way of getting people closer together through things? Thank you for bringing this up. So I still like right now when I'm saying it, I'm just like Harsh, no. So I can't say disgusting habit. Of course, it was not his fault. He didn't know about it. Right. But this is a disgusting incident I can think of. Ehan, working with A.R. Rahman, everybody has just one thing to say. अगर कभी भी बात होती है तो who's your favorite musician, who's your favorite artist, सब कहते हैं A.R. Rahman. कितना मजेदार रहा, क्या थी वो journey to work with the genius, the maestro? It was literally a dream come true. Yeah. You know, to work with someone of that standard, someone who still inspires us after being in the industry for so many years. I thought like it's the beginning of everything for me. But to be honest, I still have to work, in fact, more harder. Yeah. But yeah, his hand is always on me. Like every time any of my project comes out, I have his blessings. And anytime I feel low, he has given some interview about me where he talks about Ehan is the next Batman and Superman. I love it. It in the times of COVID, I was thinking of like actually leaving the industry because there was no work and my film was stuck. The film line songs were stuck for 4 to 5 years. And I thought in this time frame, I have literally given my all to just one particular film. I don't have any other work profile. So when I thought of like actually leaving the industry and probably start some other business or something, that was the interview which kept me motivated. You know, I felt like someone else is believing in me more than I believe in myself. So how can I let that person down? And then, I don't know, some few months later, he called me and he's like, oh, I have a good news. They're releasing the film. So he's always that father figure for me, I would say. I have to add Yes, please. patience level का ये इसकी एक मूर्ति बननी चाहिए. No, on a very serious note, he is very calm. Anna, Nikita, let's ask you, which side is easier to pick, Ehan or Harshvardhan? You know, I'm actually the one on both the sides. Right. Yeah, I'm the last person you should be asking for picking a side. That's the audience's job. Right. Which side to pick. In reality, on screen, both the places, I'm very divided between these two men. हर्षवर्धन, TJ भानु को हमने गन्स एंड गुलाब्स में देखा, we've seen her earlier also. आप दोनों की केमिस्ट्री इस फिल्म में काफी सुंदर लग रही है. कोई एक फॉर्मूला होता है आपका कि वर्क रिलेशनशिप्स को how to make them work? Oh, that's a very nice question because I never spoke to TJ Bhanu before the shoot or after the shoot, even while shooting. So it is the director's expertise. और ये सब जो लोग बोलते हैं कि आपको साथ में हैंग आउट करना चाहिए फिल्म करने के लिए, मेरी इनसे भी इतनी कोई बातचीत नहीं हुई सेट पे. तो ये डायरेक्टर का कॉन्शियसली करते हैं? मेरा ऐसा हो जाता है. मेरा बचपन से ही शायद कुछ ऐसा एक ब्लॉक है कि मैं बहुत ज़्यादा जाके एकदम से घुल मिल के. But he's an introvert, is what I've realized. Harsh is a bit of an introvert because whenever we did go and interact with him, he would interact very nicely. बहुत कुछ मेरे को समय याद है when off camera we've had conversations with Harsh and बहुत प्यारी बातें हुई है तब. Abhi, of course, we are interacting way more. So I figured this about him during the shoot only, that he's this introvert kind of person. If you go, he'll address you nicely and talk to you, but otherwise he'll not take that step. What is your work formula? Do you want to like stay in the character, which is why you sort of... You know, I think I take it, I can't say that I go with like one note on every film set. It's been different on every set that I've worked on. Specifically on this set, we all ended up vibing so much, like we as well. When I say we, it's Ehan, me and the Tamil actors, that we have actually chilled a lot when we were not shooting off the camera or even when we were not on set.
वो हर सेट पर नहीं होता है. तो इट्स लिटरली द वाइब दैट यू गो विद. आपको अच्छे दोस्त कहीं पर भी मिल सकते हैं. राइट. यान आपके साथ में ऐसा होता है? आजकल मैं जरा वो क्या कहते हैं, स्टार साइंस में ज्यादा बिलीव करती हूँ. तो अगर मेरे साथ में कोई को जॉक, अगर वो सोच रहे हैं चलो ऑडिशन वगैरह करवाते हैं, अगर एक्वेरियन के साथ में लीब्रा है तो ग्रेट. Are you an Aquarian? Yes. Oh, love that. So your birthday must have just gone. Yeah. Is it 7th of Feb. Yes. Yeah. Oh, brilliant. Happy birthday to you. तो आपके साथ में ऐसा होता है कि मतलब स्टार साइन अगर है तो बेटर. But you're a Leo, I'd rather chill and hang more with you. I mean, it's... I'm the guy who doesn't believe in numbers. अरे stars, यार, signs, boring. stars, किसी पे भी मैं believe. मेरे हाथ पे कुछ नहीं है. double A कभी नहीं I don't आएगा. believe in anything. Sagittarian का आपका बहुत फिट बैठता है. We're very good friends. हम हमेशा ऐसे भी स्टार्ट विद अ ग्रेट रोमांटिक रिलेशनशिप और फिर हम फ्रेंड्स बन जाते हैं. और इट्स जस्ट मी, आई डोंट नो. That's Aquarian and Scorpios, by the way, because I do this calculation a lot. So that's why I'm very well aware. Especially when it comes to dating. The first thing you see about the person, like, star sign, no. Yeah. ध्यान ये सवाल आपके लिए कि हर कॉलेज में ना प्रकार के ग्रुप्स होते हैं. पढ़ाकू जो होते हैं वो तो होते हैं, फिर आपके रैगर्स होते हैं जो रैगी करते हैं, फिर बंकर्स होते हैं, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर ही करते रहते हैं. जब देखो तब डांस, स्पोर्ट्स. कौन से ग्रुप में फिट बैठते हैं आप? मैं तो बैक बेंचर था. बैक बेंचर. बैक बेंचर. चौक वॉक आपके ऊपर पड़ती थी या आप फेंकते थे? मैं फेंक. अच्छा. पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं पढ़ता, मैं अच्छा था. अच्छा, लेकिन बैक बेंचर. Studying very good. Like I'm this guy who used to be like 97 out of 100 in maths. But मैं एंड में पढ़ता था हर दिन, like एक महीने पहले. पूरे साल कभी नहीं पढ़ता. तो नोट्स आपके खुद के? I'm sorry, I'm just like intrigued. Yeah. Great. Perfect. Very nice. I wouldn't have We didn't know about काफी this. naughty type लग रहे हैं आप. Why? You want to know about all this? यहाँ दंगे दिख रहे हैं चेहरे पे. कॉमन फाइट्स होती हैं हर्षवर्धन फॉर यू कॉलेजेस में. हमने तो फिल्मों में ज्यादा देखा है ये मॉडल वर्सेस. आपने जो जीता वही सेकंड में देखी? जी बिल्कुल. हाँ, ये मॉडल और राजपूत के जो एक रहता है ना, वो यू एवर इन वन ऑफ दोस, बट बिकॉज यू सच अ calm, peaceful boy, I don't know if you ever got into No, fights. calm, peaceful is a very wrong umbrella. I was a very non-confrontational kind of a boy in school also, even in my house. So I was rewarded for being invisible. So if you read about invisible child, there's always one in a house. अगर 3 भाई बहन हैं तो एक होगा आपका गोल्डन चाइल्ड जिसको दिखाया जाएगा, शोकेस किया जाता है, ये देखो ये हमारा प्रोडक्ट है. एक होता है जो चाय वाय लेके आता है और एक होता है जो गायब रहता है सीन से. वो तो मुझे इनविजिबल रहने में हमेशा फ़ायदा हुआ है. स्कूल में भी झगड़ों में जैसी, और मेरे को ना एक स्पाइडरमैन वाली वो सुपर पावर है, तो मेरे बाल खड़े हो जाते हैं जैसे मुझे पता चलता है लड़ाई होने वाली है. तो उल्टा है दंगे, मतलब मुझे पता भी चलेगा ना इफ़ यू आर इन अ बैड मूड, तो मैं बड़ा सा सर्कल बना के आपसे ना उधर से ऐसे करके स्माइल करते God, we can never be in a relationship, Harshvardhan. दंगे करने पड़ेंगे. भाई मैं confrontational, I have to fix fights before I No, go no, to bed. I don't fight only. That's the Hello ghost. Relationship शुरू होने से पहले ही ghost कर दिया है तो बहुत ही cute बात है. That's great. मेरा फाइट का सीन होता ही नहीं है. Yeah. मतलब मैं कट ऑफ हो जाता हूँ Yeah. और पता भी नहीं पड़ता That's सामने. ghosting. That is ghosting. Cut off. आजकल का Gen Z टॉप है ghosting. Instagram पर जब भी निकिता आपको देखते हैं very motivational नहीं कह सकते, very inspiring for a lot of people. लगता है चलो ना आज से we'll just try to do something जो निकिता करती हैं. उठो, get into the rhythm, work out, eat the right food. But it's 6 a.m. club I do. Yeah. Correct. But it doesn't happen for me at all. कैसे आप motivate करेंगे हम जैसे लोगों को? I'll tell you this, waking up in the morning thing is a very personal thing. वो हर कोई नहीं करता है. In my own house, मुझे बचपन से आदत है सुबह जल्दी उठने की. Even summer vacations and all, my dad and I were the 2 people who used to be awake early in the morning. And then we used to do some activity, like we used to either go out for a walk, he would come down to play, हम बैडमिंटन खेलते, कुछ ना कुछ हम लोग करते थे. तो ये आदत मेरी बचपन की है. ये ऐसे नहीं कि अभी मैं करना शुरू हुई हूँ and all. And a lot of people don't like doing that. Like I've seen my own sister who used to wake up very late and I would wake up very early. My thing is, what you do after waking up is important. What time you wake up is not important. Ideally, yes, waking up at 6 a.m. makes me really happy. I love doing it. I think my body, everything is sane when I'm waking up early. But your habits, small things that you do जब आप उठ जाते हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या रूटीन है आपकी, वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो वो चीज़ें करिए. 6 बजे आपका मन है उठना है तो उठिए.
हमने सुना है कि निकिता महीने में केवल 4 कप पीती हैं कॉफी महीने नॉट उससे हफ्ता कम, उससे कम। हाँ उससे भी कम वो मतलब अगर हो गया पहले 2 हफ्तों में ही 4 हो गए तो 2 हफ्ते कॉफी तड़प रही होगी मुझे निकिता। It's happened already. इस महीने I've just already finished my 4 cups of coffee का कोटा, तो 1 मार्च तक कॉफी बिल्कुल भी नहीं। That's the kind of discipline that we're talking about. हर्षवर्धन, क्या आप ओल्ड स्कूल लव में विश्वास रखते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे ओल्ड स्कूल मुझे शांति वाला रिलेशनशिप बहुत प्यारा लगता है, जहाँ पे रोज सुबह आपको उठ के एक दूसरे मतलब शक्ल देख के और प्यार आए, वैसा वो वाला मुझे एक बॉडी कांटेक्ट ऐसा कुछ ना कुछ घुटना फिर तो बन सकती है हमारी, फिर तो इट्स ऑलराइट। अगर घोस्ट वोस्ट कर दिया भी ना कन्फ्रंटेशन में, आई विल एडजस्ट। लाइक आई यूज्ड टू हियर फ्रॉम माय डायरेक्टर्स राधिका मैम, रने सर, कि वोलेटाइल जो होते हैं रिलेशन वो भी बहुत ऐसे, मैं बहुत कोशिश करी ये समझने की, बट आई थिंक आई हैव सीन दैट विद माय पेरेंट्स एज अ चाइल्ड। तो मेरा उल्टा ही हो गया, जो मैंने बचपन में देख लिया उसका उल्टा ही मेरी बॉडी अपने आप इस तरफ जाती है। सो आई फील मुझे वो वाला प्यार अच्छा लगता है कि सुबह उठ के आपको बहुत सुंदर लगे आपकी गर्लफ्रेंड। वेरी स्वीट। इहान, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के? यहाँ प्लीज somebody। एक ही है, हर्षवर्धन राणे, दैट्स इट। इहान, काफ़ी सारे जेनजी टर्म्स हैं जिससे मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ। आई एम अ हार्डकोर मिलेनियल, तो ये पिंक फ्लैग, सिचुएशनशिप, पिंक फ्लैग, या सो I've heard this for the first time। पिंक फ्लैग, सो रेड इज रेड ऑफ कोर्स, ग्रीन इज ग्रीन। पिंक का सीन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल दे रहे हैं तो हाइपोथेटिकली अगर हर्षवर्धन और मेरे रिलेशनशिप में है, ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी सुंदर हैं कि अगर मेरे दिमाग में जहन में कोई दिक्कत है, I've discussed it with him and it's gotten sorted because our communication is so strong. So that's a pink flag. That's a pink flag. Recently somebody told me light green flag। There's a beige flag मतलब ये also. ग्रीन से भी ऊपर है पिंक। Pink actually Yeah। ग्रीन और रेड के बीच में, मतलब बीच भी नहीं कह सकती। No, this is better than green in fact। No, green is basics. This is blissful। This is more than basic। It is, Yeah, actually, but so I'd it's better rather than green। believe it's basic only because communication is communication। Yes। But you're right, green से ऊपर है। Yeah। तो ये सारे terms हैं। आप क्या Gen Z के जो terms हैं या फिर the kind of love there is, do you believe in it? What kind of love do you believe in? Same, like Harsh said, like I have seen my parents like being with each other for so many years. They discuss everything in detail. Even when they fight like cute kids. You know, that's the kind of love I want in my life. तू पागल नहीं, तू पागल, तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, something like that. Okay, अगर आप सबके लिए ये सवाल, if you could swap your lives with movie characters for one day, which character would you swap your life with? Ehan, you want to start There's first? so many characters going on in my head right now। Don't think too much and just say. DiCaprio from Inception। I think I'll take Meryl Streep from Devil Wears Prada। Oh my God, I love you so much. I really would take that। I feel like as girls growing up, we've idolized that movie, right? Like we've seen all 3 of them, Yes. and in fact, they all came together right now for these awards। SAG. Yeah, it was so beautiful to see that. We've all literally lived that. It was our we wanted to dress up like them, behave like them, everything। I agree. So yeah, Meryl Streep। I think it's a great choice. And Harshvardhan, you can very well move at a glacial pace. You know how much I like that. You will understand what I'm trying to say, but yes. नहीं I was नहीं, waiting मजाक for करेंगे यार। मुझे बस मेरिल स्ट्रीप का एक डायलॉग मारना था, बस that's it. मार लिया, यही था। I like बाहुबली। I like how ऐसा लग रहा था शुरू में ही तो बस चढ़ रहा है पहाड़ों पे, चिल कर रहा है, लेकिन बाद में उसकी लाइफ खुलती है। And then people understand the small things and then suddenly पता चलता है बहुत बड़ा कोई प्लॉट खुला, सडनली पता चलता है कि उसको अचानक से बहुत लोगों को बचाना है, सडनली पता चलता है कि उसको बहुत बड़ा टास्क है उसके पास। तो फ्रॉम चिलिंग इन द माउंटेन्स टू बहुत बड़ा टास्क, वो मुझे ट्रांजिशन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। All of that unfolding. Fabulous guys, it's been real pleasure. Thank you so much for taking out the time. अपने बहुत ही busy schedule से. No, thank you. Such good questions. And you know regular questions और वही सवाल. You know, you've actually not asked us regular questions। Not even once. Not even once। Not even Not once. even once। So much fun। It's just been so spontaneous। Yeah। Thank you. Really, it really is. Nikita is happy। Thank you. I am Send your friend really request happy। now। Nikita, Nikita, fine, start following you। Wake me up at 6 a.m.
ये तो सुन लो उसका लास्ट Nikki fine started following. नोटिफिकेशन है. More than happy to do that. Guys, दंगे रिलीज हो रही है 1st of March को. अगर आपको फिल्म पसंद आई है तो उसके बारे में बात भी कीजिए. वर्ड ऑफ माउथ आई थिंक को हम अंडर प्ले करते हैं बड़ा सारा. सिर्फ इंस्टाग्राम ट्विटर पे किसी चीज़ को ट्रेंड करवाना बहुत अच्छी बात है. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे नहीं है. सही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, दुश्मनों से बात हो जाए तो दुश्मनों को बताएं कि दंगे अच्छी फिल्म है और 1st of March को जरूर देखें. थैंक यू सो मच. So sweet. Thank you so much. हर्षवर्धन एंड निकिता.